Assalamu alaikum. Welcome to Begums today. I'm very excited for you to meet my guest today. Her name is Nazia Ijaz. And आप अगर आर्ट वर्ल्ड को थोड़ा बहुत जानते हैं तो you would be well aware of her work. She also happens to be my teacher. She taught me for a little bit. थोड़े दिन पढ़ाया था उन्होंने मुझे इंडस वैली में. Basically, her other claim to fame is that mashallah she is Madam Noor Jahan's daughter. She is, yeah, and that's an incredible legacy to carry. And I think that it'd be interesting to talk to her about some of the shared parallels that we have कि हमारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ मिलती हैं, you know, having a mother who is so famous, such a great legend, how it feels to grow up under that. So आज बात करते हैं. Let's go. Assalamu alaikum, Nazia. I am so excited to be with you, having this conversation with you after literally decades. Walaikum salam, Nariman. It's lovely to be with you as well. It's I'm so excited that we finally made this happen. As you might know, the idea of the show is that we are talking. I wanted to talk to women who have inspired me, and they have their own way of doing things. And I want to sort of discuss being a woman, finding your own way, navigating life, and you know what? At this stage of your life, the lessons you've learned, and the things that I can learn from you. So basically, and I think what was intriguing to me is that we share something interesting, even though मेरी अम्मी और आपकी अम्मी जो हैं वो लोग legends हैं. So I mean in their own space. My mother would never. आपको पता है मेरी अम्मी का. She would never put herself anywhere near your mother. तो वो तो growing up हमारे घर में there was only one icon. There was only one. मतलब she was on a mythological level. जो आपकी mother थी, mashallah, you are. I'm just mentioning in case someone who doesn't know, कि your mom is Madam Noor Jahan, the legend, the ultimate legend in Pakistani culture. She's mashallah, she's like I'm saying, it's almost a mythological level. Just level pe she, the kind of respect and admiration people have for her and her place in Pakistani culture. And so I मैं आपको क्या बताऊं, मतलब हमारे घर में. That's really true. She was an absolute giant as far as South Asia is concerned. ऐसे लोग मैं एक मरतबा पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम आते हैं किसी भी सेंचुरी में जो ऐसे आते हैं और दुनिया को जिस दुनिया में भी वो पैदा होते हैं, they change the world a little bit. And I think these people are few and far between. And I was very lucky to have known one of them so closely, so intimately. But जब आप छोटे होते हैं इन चीज़ों का आपको भी I'm sure you didn't really realize जब आप वहाँ पे रह रही थी अपनी वालदा के साथ that what kind of a person what a big legend you were living with. Or as we grow up, one realizes that what a privilege it has been to have grown up in the proximity of greatness. I totally understand. I know exactly. That's what I felt was an interesting connection between you and me, other than the fact that you were also my teacher. And I was not a great student. But the other thing is, I think I definitely, the older I get, the more privileged I feel. It's not just, your parents and their space, but also the people around them that you grew up watching, who are also huge, parts of our culture and who are pioneers building blocks of Pakistani culture. Absolutely. Yeah, it feels like we witnessed something. Absolutely. ऐसे लोग देखने को मिलते जो कि उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता. और
मेरे साथ भी छोटे होते I've sat in Zeba ji's lap with Mohammed Ali साहब right उनके घर पे खाने पर I've actually gone to sleep in her lap. कोई दावत थी और माँ मुझे ले गई थी और फरीदा खानम मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त and she was one of the very few people who actually came to our house. माँ घर पे लोगों को नहीं बुलाती थी ज़्यादा. But Farida ji every night almost वो आती थी and आंटी इसमत थी कि दो माँ की सहेलियाँ आ जाती थी. They would hang out together whenever my mother was home at night. And जब उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी और वो घर पे होती थी वो फ़ोन करके बुला लेती थी दोनों को. So I've actually known Farida ji since I was quite young. And Mehdi Hassan साहब को मिल चुकी हूँ, गुलाम अली साहब को मिल चुकी हूँ. So I have met some very great people. फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो बेटी है सलीमा हाशमी, शी इज़ बिन माय टीचर. शोएब हाशमी साहब के साथ मैंने ड्रामा किया हुआ है. उनका बेटा यासिर हाशमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. सो ये सब लोग जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के कल्चर को मोल्ड किया है, इन सब लोगों को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ. And yeah, it's been a great privilege. It just gives you this whole other perspective on I mean, and the value of these people, because we were inside and outside. I mean, matlab at the same time as we are their children, hum unke fans bhi hain. You know, it's a very interesting relationship where you're like, okay, I understand what she did, you know, as an outsider as well as, matlab she's my mother, but at the same time. True. I'm a very big fan of my mother's as well. When I was quite young, not from the point of view of actually wanting to ever sing professionally, but मैंने कुछ अर्सा मौसीकी सीखी भी. और this is when I was going to NCA. कोई एक साल भर वो माँ के उस्ताद थे, उनसे मैं सीखी थी. And you start realizing, oh my God, how difficult this is and how important this is and how beautiful it is that she does it as well as she does. यही नहीं, I think जैसे वक्त गुजरता जाता है, you start appreciating. I'm sure it happens with everybody, no matter what their mothers do. You start appreciating who your mother is and what her battles have been in her life. And उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलें आई और हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं. मेरी माँ की ज़िंदगी में शायद मुख्तलिफ थी बिकॉज वो फिल्म इंडस्ट्री में थी. आपकी वालदा के लिए भी सेम थिंग, navigating the Pakistani film industry, the drama industry. These are not challenges जो कि everyday mothers के होते हैं. But it's not like everyday mothers के challenges नहीं होते. And जैसे हम बड़े होते हैं, as we become more comfortable in our own skins and we have our own experiences, I think we begin to appreciate the challenges that our mothers have gone through and how they've navigated, and we learn from them कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है. मुझे तो याद है माँ जब when I was young और माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी कि ऐसा होता है दुनिया में, ऐसा होता है, या वो कभी मर्दों के बारे में कभी को कमेंट कर देती थी कि आदमी ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं. I used to think, ये अपनी बात कर रही है, मेरी इनकी तो बहुत फिल्मी जिंदगी है. और माई लाइफ इज नॉट लाइक दैट. आई वाज कंप्लीट बर्गर किड, बोर्डिंग स्कूल, कनेड, कॉन्वेंट, एनसीए में थी मैं. मुझे लगता था कि नहीं हमारी जिंदगी तो बहुत फर्क होगी. बट एक्चुअली everything she said is absolutely true. As time goes on, you realize that these are universal things. They are not limited to any one industry, or these are just life experiences and they shared life experiences. भले आपकी वालदा कोई घर में रहने वाली घरेलू औरत हो या बाहर निकल के काम करने वाली हो. And I used to find that fascinating. I used to laugh at myself about that I really thought that my life experiences or my life lessons would be different. But they're not really. What she was saying was right. Right. I mean, because you're literally from different worlds. And you were the youngest as far as I was the youngest, but I am the youngest. I'm my mother's youngest, but we were very close. Because I liked music and because I tried to learn something about it and because I loved poetry and I learned a lot of my understanding of poetry comes from her because उनके लिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो खुद लिखती भी थी. और कभी भी मुझे अगर कोई शेर समझ में नहीं आता था तो मैं उनके पास जाती and she would be able to explain it to me. And so these are things we had in common and she had a great sense of humor and I think I enjoyed that as well. और मुझे पंजाबी भी बहुत, हालांकि मेरी पंजाबी उनके जितनी अच्छी नहीं, वो तो बहुत ही खूबसूरत पंजाबी बोलती थी और वो घर में नहीं हमारे साथ कभी नहीं बोलती थी. तो हम लोगों की पंजाबी थोड़ी कमजोर है उनसे. और मैं तो खुद भी लाहौर में बहुत हाँ कि अम्मा ने हमारे साथ पंजाबी नहीं बोली. She didn't speak Punjabi with you.
हाँ, नहीं तो वो हमें भी नहीं मतलब हमें समझ आती है सारी, लेकिन और मैं मगर बहनों में से ज्यादा मैं लाहौर में रही हूँ। हुमा जी तो ऑफ कोर्स रहती थी, पर मेरी जो दो बड़ी बहनें हैं ना और मैं ना, वो लाहौर में ज्यादा, दे वर वेरी यंग व्हेन दे गॉट मैरिड एंड लेफ्ट लाहौर। तो मैं लाहौर में ज्यादा रही हूँ और मुझे जुबान भी ज्यादा पसंद है, तो मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ पंजाबी, आई एंजॉय करती हूँ पंजाबी। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैड इन कॉमन, एंड एंड आई थिंक जस्ट आर क्रिएटिव इंटरेस्ट एज वेल। जैसे एक किस्म की सेंसिबिलिटी होती है जब आप एक क्रिएटिव इंसान होते हैं। आई थिंक वी शेयर दैट टू, and she was just the most important person in my life. आई वंडर कि आपको ये मेरे साथ भी बचपन से हुआ है कि सब बचपन से लोग पूछते थे कि बेटा आप भी यही काम, आप भी यही करेंगे, आप भी बड़ी होके एक्ट्रेस बनेंगी या आप टीवी पे आएंगी बेटा। तो आई सिंस मतलब मैं भी was 6 years old, I remember being asked this question. तो my immediate reaction was नहीं, 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 मतलब but I felt the pressure of I think being asked again and again कि नहीं मैंने नहीं ये मैं that's and then almost developed like a मतलब I was always interested in arts and production and drama and मेरा I was like नहीं मैं ये नहीं because I think I just felt like it was too obviously the comparison. ये दोनों तरफ होता है एक्चुअली। अभी आप देखो कि इतने लोग होते हैं जो एक्टर्स होते हैं जिनके बच्चे आगे एक्टर्स बनते हैं, दे डू रियली वेल, दे डू वेल इन द इंडस्ट्री, एंड दे ऑब्वियसली उनको एक पुश मिलता है माँ बाप की तरफ से। पेरेंट्स हैव ऑलरेडी मेड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स, तो उनके लिए कुछ तरीकों में आसानी होती है, मगर ऑन द अदर हैंड बहुत मुश्किल भी होता है कुछ के लिए, because they're constantly compared. They're constantly compared to how great their parents were at that job. So I can understand you say कि नहीं मैंने नहीं, and I think मेरे लिए तो कभी सवाल भी नहीं था ये कि आप गाएंगी कि नहीं, because I think मेरे माँ बाप की बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड थी about their daughters not going anywhere near the film industry. अब मैं बात कर रही हूँ 80s की 90s में, जिस वक्त ये पूरी इंडस्ट्री काफ़ी मुख्तलिफ थी, which is not the industry that we look at now. Having said that, again, things don't change. कुछ चीज़ें बदलती हैं मगर काफ़ी चीज़ें सेम भी रहती हैं। मगर अब it's much more open industry in terms of maybe it is easier to navigate. I don't know. I'm not from there, so I don't know. बट उस वक्त मेरे माँ बाप के जो एक्सपीरियंसेस रह चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग स्टूडियोज जाएं या फिल्म इंडस्ट्री में जाएं। बट आई एम श्योर अगर हम में से कोई जाना चाहता तो वो ज़रूर सपोर्ट करते। बट यस, जब कोई अपने काम में इतना अच्छा होता है, तो being their child, you would be afraid to be compared with them or constantly having to compete with that idea or notion कि भाई उनकी बेटी को ऐसे होना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए। So I knew I didn't want to be in that area, so I paint. I'm still a creative person. I am an artist. That is your main thing. That's what your whole life is around now. It has been your creative process. I see. I know that you have. I mean, just there was a series. There was a series where you worked on your mother's image. You used it as part of your work. I feel like she's been a part of my work, my entire practice. She's been around and she's been very much a part of it. And obviously anything that जो जबकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े हादसात होते हैं या बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं, यू कैन नॉट हेल्प बट वर्क, डू सम वर्क अबाउट इट। आई थिंक इट टुक मी, मैंने जब माँ के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू किया in a cohesive manner, उस वक्त उनको गए कोई 18 साल गुजर चुके थे, and I think it had taken me that long to just process everything enough to be able to put it down in some sort of form. और अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं उसको I've been able to do justice to it. I think it'll take some time and it'll take some more work. अभी मुझे लगा था कि मैंने काम शुरू ही किया तो मेरी डेडलाइंस आ गई थी और मुझे उसका काम नुमाइश के लिए लगाना था। But like I said, she's been such a huge influence in my life that my practice is not separate from her. वो मेरे हर काम का एक हिस्सा है, भले वो उनका किरदार हो, उनका वर्क एथिक हो, उनसे इंस्पिरेशन हो, उनकी आवाज़ से इंस्पिरेशन हो, या that level of excellence that she has set for me. I think that in itself is a guiding force. So she will always be a part of my practice, भले मैं उनकी तस्वीर बनाऊं या ना बनाऊं। But yes, 2019 में मैंने एक show किया था, which was called Love Letters, and that was images of her mostly.
And it was based on the fact कि वो मुझे चिट्ठियाँ लिखती थी जब मैं लंदन में पढ़ी थी. I was at UCL and I was there to do my masters. I was studying at the Slade. And उस ज़माने में cell phones तो नहीं थे मेरे पास. This is in the 90s. And cell phones होते थे, but I didn't have a cell phone. And I used to stay in a residence hall. और वो phone पे बात होती थी, वो call book करनी पड़ती थी माँ को. And it was really expensive to call. And also she used to write to me quite regularly. Aerograms होते थे, उनकी पूरी उर्दू में चिट्ठियाँ लिखती थी. Every week, every other week, I'd get an aerogram. And at the Slade, there used to be this corridor where you could take a break and have your coffee and whatever. So I would sit down there and वो सीधा कॉलेज भेजती थी तो मुझे वहाँ मिलता था. मैं बैठ के कई दफ़ा पढ़ी होती थी और मेरे कुछ दोस्त चलते हुए वहाँ रुक जाते थे और they were from Portugal, Italy, Germany, जगह जगह से लोग आए हुए थे. And they saw that the script is very beautiful. So they used to tell me कि मुझे पढ़ के सुनाओ ये क्या लिखा है. And I would try and translate them. और माँ had a beautiful way of speaking and writing. You know कि जान आप बहुत याद आ रही हैं और इस तरह करके वो लिखती थी खत. So when I would translate it, I'd say, oh my God, it sounds like a love letter. So I would be in those corridors reading, and that gave the name to my entire show. I called it Love Letters. And I included some of the script, some of her handwritten script in that show. So yeah, I did one exhibition which was more overtly connected with her. And like I said, she's a part of my work. And I suppose always will be. I did want to talk to you also about your personal journey. Okay, I mean, I know you migrated a couple of times actually. देखा जाए तो when you went to study or आना जा मतलब here and there, England. I was born in Lahore, but I grew up in the Murray Hills. I grew up in a convent school in Murray, Convent of Jesus and Mary. So I went there when I was 6 years old. And it was a beautiful place to grow up. Obviously, it was very difficult parents के बगैर रहना, मगर जगह बहुत खूबसूरत थी, मौसम बहुत अच्छा होता था वहाँ पे. And there's a love of nature, I think. जब आप ऐसी जगह पे बड़े होते हो, तो एक आपको सुकून, एक कुदरती तौर पे you begin to enjoy nature और आपको बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों से. And then I came to Lahore. I went to Kinnaird College over there and NCA. That's the time that I actually lived in Lahore with my mother. And मेरी बहनों की काफ़ी जल्दी शादी हो गई थी. They moved to Karachi. Then I went to London. I was at the Slade. And I loved it. I loved being in London. I loved living there. And going to college, university there. I thought कि मैं कभी वापस ही नहीं आऊँगी. मुझे इतना अच्छा लगता था उस वक्त. But I came back to Pakistan. My mother wasn't well. और वो कुछ साल हमारे अस्पतालों में ही गुजरे. आगा खान से लेकर अमेरिका, लंदन, जगह जगह वो 3-4 साल माँ काफ़ी बीमार थी. And towards the end of that, we came and settled here in Karachi because आगा खान हॉस्पिटल यहाँ था. मेरी दोनों बहनें यहाँ रहती थी. And I started teaching at Indus Valley School of Art and Architecture, which is where I met you. I taught there for 4 years. उसी दौरान माँ का इंतकाल भी हो गया. And it was that college at that time, that job gave me the stability that I needed during a very difficult period of my life. And so Karachi was nice to me in that way. मैं 4 साल यहाँ पे रही थी. But I didn't know Karachi very well. I used to be home or at the university. So उसके बाद शादी करके मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई. I lived in South Australia for 14 years. Beautiful place. Lovely landscape. Lovely friends I have there. और वहाँ पे कहीं पे भी आप चले जाओ तो it's like a picture postcard. If you go to the beach, भले वो साफ sand हो और बच्चे खेल रहे हो और and it was, I have to say, a beautiful place, a lovely place to bring up my children. There's so many parks and I used to really wish कि जिस तरह यहाँ पे इतनी सफाई है और इतने तरीके से आके लोग काबिज उठा लेते कि काश हमारे मुल्क पे भी, हमारे कराची में भी ऐसा हो सके. तो मेरे अब्बा मुझे कहते हैं कि अगर सारे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन उठ के एक अगर शहर में बैठ जाए तो they won't be able to manage either, because that's what our Karachi is really. Our Karachi is just as populated as all of Australia, I think. It's just already in different places. जैसे आपकी बचपन में था, it wasn't just with your parents. So that's interesting, and I wonder how that informed your work, like your creative process. It's a difficult thing to stay away from your parents, but I think they did the best that they could for us at that age. उस वक्त दोनों मेरे माँ बाप काम कर रहे थे और उनका काम इस तरह का था
कि उनके टाइमिंग्स बहुत ऑड होते थे, एंड रादर देन लीव देयर डॉटर्स एट होम विद सर्वेंट्स, दे प्रेफर्ड that they live a more structured life. We understand that. Having said that, it's still very difficult at a very young age to stay away from your parents. But it made all three of us, मेरी दोनों बहनें भी थी उसी बोर्डिंग स्कूल में, हमें लगता है कि हम जिंदगी में कुछ भी टैकल कर सकते हैं. There's a flexibility that we've learned from that school. We've learned कि जब आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ करने को, फिर भी आप वो चीज़ कर लें, which is a very important skill to have in life, to be able to do something that you don't want to do. That's a certain discipline that it takes. So we found that we could tackle a number of things because of that. ऑस्ट्रेलिया हालांकि इतनी खूबसूरत शहर है, मगर मैं वहाँ 2 बच्चों के साथ वहाँ पे अकेली थी, and I think I would not have been able to tackle Australia the way I did if I hadn't gone to boarding school. So it's a valuable thing if you take it as such. अगर आप चाहें तो आप लेके इस बात को रोते रहे कि हमें boarding school भेज दिया. But it's how, actually when you say na lessons stuff, that's an important lesson I've learned. कि उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, but the kind of twist that we give it is very important. कि किस नजरिए से हम उसको देखते हैं, उसी चीज को अच्छा या बुरा कर देती है. और मैंने तो यही सीखा है that अगर आप जिंदगी को एक अच्छा twist, if you try to learn from these hardships, your life is a lot better. So that is an important lesson that I've learned and I try and apply in my own life. कि अच्छा बुरा तो होता रहता है, वो तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो चलता रहता है. You could be the richest people, you could be the children of the most famous people, you could be the poorest. हर किसी की जिंदगी में खुशियां भी आती हैं और गम भी आते हैं. अगर उन चीजों को जरा हमसे कुछ सीख ले तो बहुत अच्छा हो. What is I mean, especially being so independent at such an early age, I think for all women generally हमारा जो relationship with fear है वो बड़ा बहुत ही एक मुश्किल relationship है. And I wonder that, is there something that you were afraid of when you were younger and that you're not afraid of anymore that has changed for you? Perhaps I'm not afraid of fear anymore because there's never an absence of fear. Courage is not an absence of fear. Courage is perhaps moving forward in spite of it. It sounds like a cliche, but it is true. डर कभी कहीं जाता तो नहीं है. उसके साथ अगर आप रहना सीख लें और उसके बावजूद आगे बढ़ना सीख लें, I think that is really important. So that's what changes. Fear stops scaring you as much as you keep moving ahead in life, because I've just learned that it's about putting one foot in front of the other. अगर आप नियत करके आगे चल पड़े तो फिर अल्लाह ताला रास्ता निकाल देता है. And मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसा ही हुआ है. मैं जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान भी आई थी तो कोई किसी प्लान के तहत नहीं आई थी. और जब मैं पाकिस्तान आई थी मुझे सब पूछे थे कि why you come back, and I said this is home. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, I got married and left, but it's not like कि मैं वहाँ जाने को उतावली थी. I'm so strongly rooted here. I think mostly because of my parents. कि मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी जाना ही नहीं चाहती थी यहाँ से. But जब मैं गई, I really enjoyed being there also. Such a beautiful place. The produce is so nice. Like I said, I met such lovely people, lovely friends, and we raised our children together. So अल्लाह का बहुत शुक्र है वहाँ पे भी. पर वहाँ पे मुझे घर भी बहुत ज़्यादा याद आता था, मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा याद आती थी, because मेरी बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, and we're all very close. So when I came back, my Abba was still here at that time. He passed away after I came back. अच्छा, So he was still here. वो बहुत याद आते थे मुझे. That's good that, you were able to spend time with him. Yeah. I was able to spend some time with him after coming back. I see that also आप लोगों की भी, you and your sisters are a lot like my mom and her sisters in some ways. कि वो लोग, they're all very close. There's a very strong bond you can see. जबकि you guys are not all on TV, लेकिन whenever you're together you can see कि वो आप लोगों का है. You were all together at the same time in the boarding, right? We were all in boarding school together, but Hina and Mina are closer in age. They're like a year apart, so they were always closer together. And I was like the little one following behind. So they've always been closer. But once my mother passed away, उस वक्त it's like, हालांकि दोनों मुझसे इतनी बड़ी नहीं, वो 5 साल, हिना मुझसे 5 साल बड़ी है, मैंने 4 साल. But it's almost like they adopted me once my mother passed away. And they became just so wonderful to me that वो जो थोड़ा बहुत gap था भी हमारे बड़े होते always they were closer.
to each other. And I was always sort of stuck to my mother. But जब वो गई, तो it's like all my siblings took on the responsibility of being my parents. And they were really nice to me after that. So yeah, I- I'm वैसे on a different note. You're an artist, and you are well. You're a single mother, and me myself, me too. लेकिन मैं artist, like in terms of understanding money, how to connect, how to connect financial value to your art, for example. And I wonder how that has been for you growing up and now as well. What is your relationship with money? Alhamdulillah, God has been very kind to me, as my mother's daughter also. But other than that, as an artist, you're right. Sometimes maybe one's mind doesn't compute things in the same way as, for example, a banker would. The same things are not perhaps as important. कई दफ़ा होता है आप पेंटिंग बनाए और कोई किसी ने तारीफ कर दी तो आपका दिल इतना खुश होता है कि आप वैसे ही दे दें पेंटिंग, because you feel like you've been paid just because someone liked it so much. Again, with time and experience, you learn that no, इसमें भी respect है. If you do not give away your work, it is important that someone. I feel that people value your work more also when they actually pay for it. So that's also something that I've learned in time. Otherwise, अभी तक मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है जब किसी को काम कोई पसंद आए. But I do find, I know पहले मैं कई दफ़ा दे भी देती थी, my friends and sisters and all, उनको तो of course मैं दे देती हूँ. But I do find that people value work more if they're actually going out and purchasing it as well. And being a mother, and what the life lessons teach you is that you have to then, there's no getting around it. If you want to be free as a woman, you have to have financial freedom. And if you want financial freedom, you have to learn a little bit about money and how to handle it. And there's no getting around that. You can't always be कि हाँ जी मैं तो बस artist हूँ और सब चल जाएगा, because all that does is limit you. पैसे की सबसे अच्छी बात यह है that it gives you freedom. And that's what I like best about money. And that's why I want to earn it, and I want to learn about it, and I want to be able to handle it well, because it gives you the freedom to do or live the way you want to live, or travel the way you want to travel, or to educate your children, etc. It's not something to be accumulated and ये नहीं कि आप जमा करके उसके ऊपर बैठ जाएं. वो इसलिए वो भी रिस्क आपको दिया अल्लाह ताला. आप इंजॉय करें, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, आप लोगों की हेल्प करें, अपने बच्चों को इंजॉय करें. और सब चीज़ों के लिए पैसे के बारे में सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको संभालना भी और उसको जनरेट करना सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक हर मर्द और औरत, पर ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. लाइक वी weren't raised with the thought कि नहीं आपने पैसे कमाने. I'm still from that generation, and because my parents were so affluent, उन्होंने कभी ये ड्रम डाउन नहीं किया कि तुम्हें पैसे कमाना ज़रूरी है. That's something that life has taught us. Because no matter what, you can't be that sheltered. Even if they want to, they can't shelter you all your life. Yes, exactly. There does come a point where your parents go away, and at that time, what do you do? लोगों के पास खजाने होते जो खत्म हो सकते हैं if you don't treat it properly. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि how are you looking at अब यही बच्चों की बात हो रही है कि what sort of lessons do you want कि आपकी बेटी आपको देख के she should learn from your life? Yeah, so I'm a single mother, and I think the fact that I got up and left, I think उसमें इस चीज का बहुत बड़ा हाथ था कि मैं लड़की की माँ थी. And I just thought about whether I would want my daughter to be in a situation like that. और जब आप अपने आप से ऐसा सवाल पूछते हैं तो that is what gave me the strength to walk out of a situation that did not work for me. And मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मुझसे ये सीखे कि नहीं सिचुएशन ऐसी भी हो तो आप वहीं पे ही रहें. Obviously I don't want to go into details, but कई दफ़ा होता है कि हम इस चीज़ को कह के कि नहीं मैं बच्चों के लिए रह रही हूँ, मगर हम ये नहीं सोचते कि शायद हमारे रहने से बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है. तो जब एक सिचुएशन ठीक ना हो तो कई दफ़ा अदब से, पोलाइटली और रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे से अलहदा हो जाना ही बेहतर होता है. तो आई होप शी लर्न्स दैट, एंड आई होप शी इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हर लाइफ. आई होप बोथ ऑफ देम आर, but that they learn
दैट किसी भी रिलेशनशिप में अपनी खुद की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको अपनी इंटेग्रिटी और अपनी रिस्पेक्ट के जब आड़े आने लग पड़े कोई भी रिलेशनशिप तो वो फिर कोई रिश्ता सही रिश्ता नहीं होता और मैं कभी भी ना चाहती कि मेरे बच्चे कि मेरी बेटी या मेरा बेटा ऐसी सिचुएशन में हो कि वो सिर्फ बच्चों की खातिर एक ऐसी सिचुएशन को चला रहे हो जिसमें कोई भी खुश नहीं क्योंकि ऐसी चीज़ किसी को खुशी दे नहीं सकती उसमें मेरे बच्चों को भी खुशी नहीं मिल सकती थी सो आई होप शी इज लर्न दैट एंड आई होप शी इज ऑल्सो लर्न फ्रॉम मी जो मैं आपको भी बात कर रही थी दैट देयर इज नेवर एन एब्सेंस ऑफ फेयर बट एज लॉन्ग एज यू डोंट अलाउ दैट फेयर टू पैरालाइज यू डर तो हर किसी को हर चीज से हर मोड़ से लगता है और इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मसल द मोर यू एक्सरसाइज इट द स्ट्रॉन्गर दैट मसल गेट्स जितना आप अपने आप को डर होने के बावजूद आप आगे बढ़ना की कोशिश करते हैं पहली दफ़ा बहुत मुश्किल होता है शायद हर दफ़ा बहुत मुश्किल हो पर जितना आप करते रहते हैं दैट मसल डज गेट स्ट्रॉन्गर एंड तवक्कल इज़ अ ह्यूज थिंग और मेरे में बहुत ज़्यादा है अल्लाह ताला पे तवक्कल इस बात का और अभी तक माशाल्लाह सब अच्छा ही हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा होगा सो आई हैव ग्रेट फेथ in that. I And think I have great faith that I'm very lucky. I have great faith in that Allah Ta'ala especially takes care of me and things work out right for me. And they have. See, I mean, I believe in all of this to a point of, my friends would tell you, people that I do deal with tell you that I'm overly optimistic at times. But I have not been proven wrong. I do have faith in that. और चीजें ठीक ही निकली. I think that's the thing about tawakkul, right? I mean, for me also, tawakkul has, I think the older I get, I understand it more. And शायद इसी वजह से इसको हम optimism कहें या faith कहें, it is basically just believing कि जो अल्लाह आपके लिए रास्ते जो बना रहे हैं अल्लाह मियाँ वो अल्लाह ताला it is going to be better for you. It might not be what you thought you were going to, मतलब life is going to look like this, लेकिन अल्लाह मैंने आपके लिए बेहतर ही. आपकी अपनी सोच तो कई बार बहुत लिमिटेड होती है कई बार हम सोचते हैं कि हमारी अच्छाई एक ही चीज में बट शायद उससे हमारे लिए इससे बेहतर सोचा हुआ है बट एक और चीज भी मैं जरूर चाहूंगी दैट माई चिल्ड्रन लर्न एंड इट्स ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी इज कंपैशन आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे जस्ट हैविंग कंपैशन फॉर अदर्स who are not in as fortunate a situation as you may be, I think is very important. And ये भी मैंने अपनी माँ से सीखा है वो कभी नहीं भूली कि वो कहाँ से आई थी वो कभी नहीं भूली that she was not born in the lap of luxury and at the same time she was उनसे जब कहती भी थी वो कहती थी मेरे जैसे तो बहुत है और अल्लाह ताला ने मुझ पे खास कर्म किया है एंड जब भी वो बैठती थी किसी इंटरव्यू के लिए वो एक लाइन बहुत बोला करती थी ये तेरा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है दिस इज समथिंग दैट यू विल हियर हर से इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स अफेक्टेड मी a lot as I grew up and I see that they're also true that उनका खास कर्म था अल्लाह ताला का उन पे and I feel मेरे पे भी है I really feel that because he's been so kind and I have so many people in my life who care about me and who I love dearly. And it has been good. So I can't complain. And I love my work. I think that's also so important. That's also like a blessing. I think it's a privilege to live as an artist the way I do. It's a privilege to spend my days doing what I want to do. और इसी को अल्लाह ताला ने मेरा जरिया बना दे मेरी रोजी का और to be able to earn your money or your living doing something that doesn't feel like work that gives you so much satisfaction. I think that in itself is such a great blessing. It's a huge blessing. Yeah. गालिब का शेर है ना आते गैब से ये मज़ामी ख्याल में गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है means गालिब is busy listening to the scratching of his pen तो ये मज़ामी कहीं और से आते जहन में these are not गालिब्स सो दैट ये शेर मुझे बार बार याद आता है बिकॉज सच को नहीं पता होता ये चीज़ें कहाँ से आती हैं खैर मैं ये भी नहीं कहना चाहती दैट इट्स अ बेड ऑफ रोजेस बीइंग एन आर्टिस्ट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट इट कैन बी फाइनेंशियली वेरी चैलेंजिंग अगर मुझसे कोई आके पूछता रहा आई कीप टेलिंग देम डोंट बी एन आर्टिस्ट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड यू कैन डू गो एंड डू इट आपको आर्टिस्ट तभी बनना चाहिए जब दुनिया में बस ये एक ही चीज़ होती है जो कि आप कर सकते हैं उसके अलावा नथिंग एल्स मेक्स सेंस बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी. But if you are able to do it, there's nothing like it. If you're able to live like this, then it's a great privilege.
and I am that lucky. I think it's very important for women to value their own happiness, to give permission to give permission to themselves to just focus on their own happiness sometimes and say, nee, this is I need to do this because it makes me happy. And I wonder, what is it that you find peace, contentment, happiness in today? Actually, I have to admit this is something. It's not something जो एक दफा बात समझ आते हैं और फिर आपको बार-बार अपने आप को याद नहीं दिलानी पड़ती. You have to keep reminding yourself of this because especially as a mother, हमें शायद बड़ा किया जाता है या maybe it's just an innate thing. You feel that sacrifice is important. And you keep pushing yourself to a point. And now I realize that बच्चे बड़े भी हो गए and I realize some of those things are not necessary. You don't have to sacrifice your own being to that extent to be of value to them. In fact, you are sometimes more valuable to them. अगर आप अपनी अना, अपनी integrity, अपनी खुशी का थोड़ा ख्याल रखें तो you're setting a very good example for your children. So और अगर आप एक खुद में मुतमईन और खुश शख्स नहीं है, हैप्पी शख्स नहीं है अगर आप, तो वो जो अनहैप्पीनेस है वो आपके अंदर it sort of seeps out of your pores and it gets to your children anyway. वो दूसरे जितने लोग आपकी जिंदगी में they will feel that unhappiness, they will feel that resentment अगर आप खुद में खुश नहीं है, if you're not a joyful person yourself. So and having said that, it is also important to find happiness and joy in small things. आप किसी हर दफा आप वेट करते रहे कि ओहो ये पहाड़ आएगा तो फिर मैं खुश होंगी, नहीं हो सकता ऐसे. ऐसे नहीं होता हर दफा. अगर आप अपनी जिंदगी में रोज छोटी छोटी चीजों में खुशियां नहीं ढूंढ सकते, then you will always be searching. मुझे याद है माँ का एक दफा मुझे क्या फोन आया था. मुझे इस वक्त मेरे पास एक फ्लैट था, couple of years into my thing, I had a flat to myself. और तब एक फोन होता था which I could answer. तो पहले तो रेसिडेंस हॉल में बड़ी मुश्किल होती थी. बाद माँ को मुझे फोन आया, क्या फोन है, कहती मैं ऑरेंज जूस पी रही हूँ और बहुत ठंडा ऑरेंज जूस पी रही है और जैसे वो मेरे हलक के नीचे उतरा है और मुझे आपका ख्याल है आप ऑरेंज जूस पिया करें. That is such a lovely thing. Today, when I pick up a glass of orange juice and drink it, I think of her, and that's the kind of happiness I'm talking about. If one can find these little moments of happiness, कोई ऐसी स्टेट नहीं जो सारा वक्त रहती है. ये छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो आपको चुनने होते हैं. As long as अल्लाह ताला आपको ये awareness दे, and you can create that awareness in yourself कि ये आपके इर्द गिर्द हर जगह है. Oh my God, my friends are going to hear this interview. They're really going to. I feel like मुझे मारना है because they get really annoyed because they think sometimes I'm overly happy and overly optimistic, because I really do. I genuinely find clear pleasure in small things. And I think that has gone a long way in making me the person that I am today, in keeping me from being resentful and keeping me from being bitter. And because मेरी जिंदगी में मुझे रोज माशाल्लाह काफी खुशी नजर आती है और अल्लाह ताला हमेशा ऐसे रखे कि आपको ये चीजें दिखाई दे और आप इन चीजों को एंजॉय कर सके. क्योंकि अगर आपका दिल खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं चलता जिंदगी में अच्छा. आई थिंक ये भी एक शुक्रगुजारी का एक तरीका होता है. I want to thank you for for making the time and doing this with me. It's been a pleasure to talk to you, Nariman, and don't worry. As you get older, you get more comfortable in your own skin, and a lot of these things stop bothering you, and what people say stops bothering you. And I hope you just like yourself more and more every day. And ऐसी कंपनी में भी नहीं रहना जहाँ आपको चुप रहना पड़े, जहाँ पे आप अपनी जुबान दबा के बात कर रहे हो. You learn by this age कि नहीं मुझे वैसे उस कमरे में ही नहीं बैठना जहाँ पे आपको ऐसे करना पड़े. So आपकी अपनी कंपनी अकेले बेहतर है बनिस्बत ऐसे लोगों के साथ बैठना जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को मनूवर करना पड़े या किसी तरह अपनी जुबान रोकनी पड़े छोटा करना पड़े, अपने आप को मिनिमाइज करना पड़े. जरूरत ही नहीं आपको उस कमरे में रहने की. आप बेहतर है अपने घर में. You can enjoy the light in your house. You can enjoy the plants in your house. That'll bring you so much more happiness than being with a bunch of people who might be socially, very popular and all, but jinke saath you can't be yourself. So all of that will get better. I promise you. Yeah, bilkul. Thank you so much for inviting me to have this conversation. I've really enjoyed myself. Oh, thank you so much. I guess this is, all of us are
we are all born with some things we can change about our lives and some things we can't change. And mashallah, you and I have a sort of a unique position in that sense. And I felt that for me, it was something that I wanted to talk to you about, because there are very few people I can talk to about this. Even though मेरी अम्मी कभी भी इस बात को नहीं, you can't understand. I don't think I can. Maybe you can understand. लेकिन हमारे घर में, हमारी पूरी family में, you know, your mom, it was like, I have to tell you, हमारे बचपन में जब भी मैडम नूरजहां का पीटीवी पे गाने आ रहे होते थे, like I think all throughout my teens, every time my mother would run to the TV and say कि हाय नूरजहां को कुछ हो गया. I mean, my grandmother as well, सब कहते थे, oh my god, खाला भी कहती थी. I mean, they were so worried for her. She नहीं, was बुशरा like, जी such an inspiration herself. मुझे वो जहाँ जाती हैं वो हंसी बांटती हैं, वो खुशियाँ बांटती हैं. आप ये देखो, मैं आपसे बात करती कि जिसके साथ आप बैठो वो कहीं खुश हो जाए. बुशरा जी तो जहाँ जाती है वहाँ लोग just looking at her and they just enjoying what she's saying. हर किसी को खुश करती है. आपको मैं छोटी सी कहानी सुना. अभी नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई थी, I was visiting, और मैं लाहौर में थी कहीं. अली मेरे दोस्त अली से थी, उनके साथ मैं किसी बहुत बड़े फंक्शन में गई थी और बुशरा जी was there. And I met Bushra ji, and the first thing she said to me is कि मुझे नूरजहां जी की, मुझे उनकी साड़ी चाहिए. मैंने हुमा को भी कहा था, मैंने मिना को भी कहा मुझे साड़ी चाहिए. मैंने कहा बुशरा जी नेक्स्ट टाइम आई कम इंशाल्लाह मैं जरूर दूंगी. So when I moved to Karachi, finally I gave her that sari, and oh my god, she was so happy. you know, it is like her most prized possession. मैंने निकलवाया. तरन्नुम के कौन से गाने में पहनी थी माँ ने, टीवी पे वो गाना लगा, उनके सामने उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई. She was so happy with that. So it gave me a lot of pleasure to be able to do that. मतलब और सही में प्यार करती माँ को, तो मुझे पता है माँ को खुशी हुई होगी कि मैंने उनकी साड़ी को दे. Time when I got my mother, पता नहीं Mother's Day था या something like that, कि उनकी birthday थी, तो I made like a whole gift basket with CDs of your mom and chocolates and everything. Otherwise it's like her, she is a core part of my mother's journey. I mean, unka, I not just I think artistically, but वही बात है कि for both of us, I think we come talking about our own happiness, that seeing our mothers who were very productive artists as well as being mothers, it's a great role model. And it's great. It's a great inspiration. It's a great inspiration to have mothers like them. And I hope I can inspire my daughter. Exactly. She's 19 now. For me, I'm very proud of her. She's this. अभी मुझसे बात करती, वो अभी भी कॉलेज गई है, जनवरी में गई है, अभी 6 महीने हुए उसको गए हुए. I was talking to her on the phone the other day, और ऐसे मुझे कुछ चीज बॉदर कर रही थी. I was discussing with her. उसने ये NLP का कोर्स किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो बड़ी वो वाइज बातें करती है कभी. And we were talking, discussing something, and suddenly I just said, "Ma, just stop." So I said, "I'm just so proud of you. And I'm just so proud of the person that you've become." And she said, "Really, Mama?" And she started crying. But it's such a pleasure, mashallah, to see them grow up and to become the people that they are. Thank you so much. Anyway, I'm sure your mother is just as proud of you. And I'm sure she is. And I hope she sees ये interview, वो देखे और उनको अच्छा लगे. I know, वो उनके मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े ख्वाब थे, जो कि वो मैं अभी तक पूरी नहीं कर सकी. लेकिन वो because she is. माँ बाप के हमेशा ऐसे ख्वाब होते हैं. Please don't think that you fall short. आप जैसे भी है ना, the fact that you exist, आपके माँ बाप के ख्वाब पूरे हो रहे होते हैं. The fact that you are in this world. I can say that I'm a mother. I understand. Yeah, I get it. But anyway, thank you. And I'm so glad that we got to do this. And I am so sorry that I was such a terrible student.